चलो गाइस, एक नया दिन और गाइस एक नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। और गाइस साथ में आ चुके हैं बैंगन। और गाइस बैंगन ही वो सब्जी है जिसे काफी कम लोग पसंद करते हैं। और महाराज, आपको बैंगन क्या पसंद है? ये इतने सारे बैंगन देख के मेरा वैसे ही मूड खराब हो रहा, पता नहीं क्या। गाइस महाराज का मूड खराब हो चुका है बिकॉज गाइस काफी सारे बैंगन हैं। और गाइस अभी तक महाराज को नहीं पता है इन बैंगन का आखिर क्या बनाने वाले हैं। लेकिन गाइस यकीन मानो, अगर आपको भी बैंगन पसंद नहीं है तो गाइस हमारी आज की रेसिपी देखने के बाद गाइस ये बैंगन आपको भी काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। क्योंकि गाइस आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी क्रंची बैंगन के पकोड़े। आराम से। ऑलराइट गाइस, सभी बैंगन जो है गाइस कट चुके हैं। गाइस गोल गोल स्लाइस इनके हो चुके हैं। और गाइस क्वांटिटी चेक करो एक बार। गाइस पूरी टेबल जो है बैंगन से भर चुकी है। लेकिन गाइस अभी इनको जो है हमें करना है मसाले से मैरिनेट। गाइस इसमें अभी जाने वाला है हल्दी पाउडर और साथ ही साथ नमक पाउडर।
बेसन, कॉर्न स्टार्च, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, पानी। धीरे धीरे डालना, कभी चमन की तरह तुम भी खेल खराब कर दो। बेकिंग पाउडर, डालो मनीष जी, हरा धनिया डालो। गाइस बेसन में जो है हरा धनिया ऐड कर लेते हैं। रिफाइंड ऑयल, गाइस ये चेक करो आप, बेसन की सिलाई जो है मसाले में काफी अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। और गाइस फिलहाल इसको बेसन में डिप करना है और गाइस कढ़ाई में तलना है और गाइस फिर तैयार हो जाएंगे अपने बैंगन के पकोड़े।
गाइस हरी मिर्च, पुदीना और साथ ही साथ हरा धनिया पीस चुके हैं, पेस्ट बन चुका है गाइस। और अभी इसमें ऐड करते हैं काला नमक, नींबू और साथ ही साथ चाट मसाला। वाओ, तो गाइस ये चेक करो, खट्टी मीठी चटनी और साथ ही साथ बैंगन के पकोड़े। गाइस को टेस्ट करते हैं। बैंगन के पकोड़े काफी टेस्टी बने हैं, काफी अच्छे बने हैं। और गाइस चटनी ने इनमें 4 चांद लगा दिए हैं। बिल्कुल भाई। चटनी लगाओ। मजा आ गया।